We are talking about tracing of central conics, ellipse and hyperbola. The next topic, we have lattice rectum of the We have done that length and position of the axis of the cone. So how to find a lattice rectum and other things for a central conic. So lattice rectum of the conic. The length of the lattice rectum will be given by it will be 2r2 square upon r1. It will give you length. Eccentricity will be given by e square is equal to 1 minus r2 square upon r1 square. The r2 r1 we have done in the last lecture where we were finding the position, length and position. Then this r1 r2 they were the roots of the polynomial of 4 degree. So there we were considering that was the root. पॉलिनोमियल कंसीडर करी थी हमने, अगर याद है, r4 ab minus h square minus r square a plus b plus 1 is equal to 0. So it was quadratic in r square. इसके two roots थे, r1 square and r2 square. So these gives you the length of major axis and minor axis. It depends on some conditions. Cases हम discuss किए थे इस पे. Part you can see in the previous lecture. So here this will be the eccentricity. 1 minus जो आपके पास normally आती है 1 minus b square upon a square ellipse का केस आता होगा. If b greater than a और a greater than b तो 1 minus a square upon b square. Then we have foci. Foci is given by foci, you know, they are the points on the major axis at a distance. Foci are the points on the major axis. Ellipse के case में are the points on the major axis. और अगर पैराबोला का केस होगा तो वही आपका ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा. सॉरी, हाइपरबोला केस में ट्रांसवर्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस. कितनी डिस्टेंस आती है? ई आर वन. ए कॉमा 0 होता है अगर एलिप्स है तो योर फोकस आर ए कॉमा 0. तो डिस्टेंस जो होती है ई आर वन. आर वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, from the center of the conic. Where is R1 is what? It is the length of semi-major axis. Where this R1 is the length of the semi-major axis. Semi-major axis. In case of ellipse. अगर आपके पास हाइपरबोला है तो उसे हम सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस भी कह सकते हैं. सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस. ठीक है. थीटा आई विल टेक द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन with the major axis.
angle of inclination of the major axis with the x-axis. जब hyperbola हो जाएगा तो that I will be taking this as a transverse. Otherwise, I am writing major with the x-axis. Then the coordinates of the foci are the coordinates of the foci are alpha plus minus er1 cos theta and beta plus minus er1 sin theta, where alpha beta are the center. Where alpha beta is the center of the cone. So this will be the coordinate of the foci. Alpha beta is the center. सेंटर में निकाला था ऑलरेडी, फॉर्मूला आया था सेंटर का एक, याद है? वो सेंटर कोऑर्डिनेट रखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो इट विल गिव यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी. So we can trace by using this concept ellipse or hyperbola. तो रूल अगर इसमें हम देखें, व्हाट इज द रूल फॉर ट्रेसिंग ellipse and hyperbola? Firstly, you will take the nature. What are the rules? Rules for tracing and ellipse and hyperbola. And a hyperbola. First thing, as usual, a conic equation will be given to you. Let S is given to you, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Suppose it is given to you. First thing you will check what is the nature of the conic. Nature के लिए you will find your d ab minus h square and delta should be not 0 and d should be greater than 0 for ellipse, and if it is less than 0 then it is hyperbola. This is the first step. Then you will find its center. See your first step, suppose. Second is center. Center का formula क्या था? याद है किसी को? One question was also there based on the center in the quiz. सर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे. हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप. del s over del x is equal to 0 and del s over del y is equal to 0 ना. इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाता है hf minus bg over ab minus h square and hg minus af upon ab minus h square ना. ये फॉर्मूला आता है. आई थिंक क्वेश्चन था क्विज में, याद है? इसका ऊपर था एक क्वेश्चन, ये आप लोगों ने? यस सर था. यस सर. this will give you the center है ना. ये जब भी आएगा सेंटर when your d is not 0 है ना, क्योंकि d 0 में तो पैराबोला आ जाएगा. पैराबोला में there is no concept of a center. So ab minus h square is here, either it will be positive or negative. So this is in fact the point of intersection of these two. ऐसे आप निकाल सकते हैं, तो ये चीज निकल आएगी. Then you will find the equation of the, then third step is equation of the coding on shifting the origin to the center. I will shift the origin to the center to find the equation. So equation of the conic on shifting the center
to the origin, shifting the origin to the center. Origin को shift करेंगे center. This is the process how. ये जो आपके पास a alpha beta निकल आया है, suppose ये कुछ 1, -1 whatever, इसे shift कर देंगे हम origin के लिए. इससे क्या होगा? How to shift it? Suppose alpha beta is the center. Let alpha beta be the center. Then the equation of the conic refer to the center as origin. Refer to the center as origin. Refer to the center as origin. As suppose it is your ax square plus 2hxy plus by square plus c dash is equal to. Suppose this is a question after shifting center to the origin. It is question number 2. यहाँ पर c dash, where this c dash will be, c dash is g alpha plus f beta plus c. X is x plus alpha and y is y plus beta. ये हम सेंटर बनाएंगे. This is the equation of a conic now after transferring origin to the center, है ना. X की प्लेस पे I will put x plus alpha, capital X plus alpha, y प्लेस पे I will put capital Y plus beta. तो ये आपकी चेंज होगी, इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म में. यहाँ c डैश की वैल्यू होगी दिस. Now, so this equation 2 can be written as, this 2 can be written as capital AX square plus 2hxy plus by square is equal to 1. ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. c डैश से डिवाइड करा, where a is minus a upon c dash, h is minus h upon c dash, and b is minus b upon c dash. c dash से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड ले आते हैं with minus c dash. So we got the equation in this form. Now length of the axis is the third step. Fourth step is length we can find. So length of the axis. तो लेंथ का फॉर्मूला जो मैं दिखा रहा था अभी, जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन है, ये लास्ट लेक्चर की R4 में जो आई थी, इससे अगर आप लिखेंगे तो इट विल गिव यू लेंथ ऑफ द एक्सिस. तो ये इट वाज कमिंग एक्चुअली इन दिस फ्रैक्शन फॉर्म 1/R4 minus a by a plus b 1/r square plus ab minus h square is equal to 0. ये क्वेश्चन R4 HCM लेके लिख देंगे आप, वो एक ही चीज है. यहाँ पर 2 वैल्यूज आती है, यू नो, R square, it has 2 roots. It is quadratic in R square. It is quadratic in R square. So it has 2 roots. Say R1 square and R2 square. क्वाड्रेटिक बनाएंगे आप R स्क्वायर में, वैल्यूज a प्लस b कहाँ से आएंगी, यहाँ से. 2 रूट्स होंगे. अब यहाँ पर फिर वही केस है, अगर R1 फर्स्ट केस है, इफ बोथ R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर दे आर पॉजिटिव,
Then R1 is the length of the semi-major axis. R2 is the length of the semi-minor axis. And conic is ellipse. That this is the case is ellipse. Yeah, I have discussed all these things when I was talking about this. It's just previous lecture. तो ये ellipse है. अब इसमें R1 is the length of semi-major axis. R2 is the length of semi-minor. Understood. B, if they are in alternating sign, R1 square greater than 0, R2 square less than 0, then this is hyperbola. इस केस में ये होगा hyperbola. R1 is the length of semi-transverse axis. Semi-transverse axis. तो जो बाकी बचा R2 वो क्या हो जाएगा? सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस है ना. नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन, क्योंकि R2 स्क्वायर में लेस देन 0 होगा, कुछ नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जाएगी. इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, लैटिस वेक्टर, एवरीथिंग यू कैन फाइंड नाउ बाय सॉल्विंग दिस. इसेंट्रिसिटी यू कैन फाइंड, इसेंट्रिसिटी यही बताया आपको, वही 1 माइनस R1 square by R2 square. This is the eccentricity. So ये थे fourth, fifth. Your eccentricity, it will be E is equal to E square is equal to 1 minus R2 square upon R1 square. Foci coordinates alpha plus minus ER1 cos theta and beta plus minus ER1 sin theta. Alpha beta are the centers. Lattice vector, it was 2R2 square upon R1 for ellipse, and for hyperbola माइनस साइन आ जाएगा बस फॉर हाइपरबोला. ओके, इक्वेशन ऑफ एक्सिस. ए माइनस 1 by R1 square x plus hy is equal to 0 and A minus 1 by R2 square x plus hy is equal to 0. ठीक है, these are the axes. This is your major axis, this is your minor axis. सर ये बीटा प्लस ई R1 हो R2 होगा? ये R1 नहीं square ऊपर फूक गई. हाँ, अल्फा प्लस माइनस ई R1 बीटा प्लस माइनस ई R1 साइन थीटा. ये सेंड ये अपने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना जब उधर एंगल निकाला था आपका फाई करके, ये है. ठीक है, ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है, प्लस माइनस दिस वी हैव डन व्हेन आई वाज कैलकुलेटिंग ऑल दीस थिंग्स इन द यूनिट 3. आई थिंक यूनिट 3 में व्हेन वी वर सॉल्विंग इट, देन वी गॉट बाय टेकिंग द एंगल फाई एंड वेयर वी डिस्कस द सेंटर ऑफ द कोनिक. वहां पर हमने ये सॉल्व करके निकाला है. ठीक है, ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया था इसको, देन इट वाज कमिंग दिस. ये थिंग आई थिंक इट वाज ऑन पेज नंबर 210 पे था, 210 या 211 पे. यू कैन सी इन द प्रीवियस लेक्चर्स जहाँ पर हमने फाई एंगल लिया है इसका और फिर सॉल्व किया है. इसको देख सकते हैं आप वहाँ पे. इसे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हाउ इट इज कमिंग. Okay. So this is the axis, equation of the axis. Intercepts निकालेंगे. Intercepts के लिए you can find by putting x is equal to 0, y is equal to 0.
intercepts. So for x intercept, you will find problem by putting y is equal to 0. Y intercept में by putting x is equal to इस तरीके से आ जाएगा. So very quickly I am taking one problem. Example 1, page 239. ठीक है, page 239, 239. It will explain it more clearly how to trace the conic. The problem is trace the conic 22x square minus 12xy plus 17y square minus 112x plus 92y plus 178 is equal to 0. इसे ट्रेस करना है and find the coordinates of its focus and find the coordinates of its focus. This is the problem. So here I don't know what is the nature है ना, स्टैंडर्ड तो है नहीं इक्वेशन ये आपकी, जो हम स्टैंडर्ड मतलब कि जो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्म क्यू, यहाँ पर हमें ट्रेस करना है. इट मे बी पैराबोला, इट मे बी इलिप्स, इट मे बी हाइपरबोला और इट मे बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. फर्स्ट स्टेप आई विल चेक व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कोनिक है ना. तो नेचर के लिए क्या करना होगा आपको, आई विल चेक व्हाट इज द नेचर. So you have to find your delta. A is 22, H is -6, B is 17, G is -56, F is 46, and C is 178. First thing I will always check delta. A, B, C. क्या होता था बताइए? H, G, F, है ना? I will check it. It is coming not 0. If it is 0, it will be a pair of straight lines, but it is not 0. Then I will check AB minus H square, which is here coming, and 338 will be coming positive. So this implies that it is an ellipse, है ना? इसको अगर मैं one equation कह दूं, so one represents ellipse. अब ellipse के लिए I will find rest of the things. The next thing is center. Where is the center? तो सेंटर का फॉर्मूला आपको मालूम है, मैंने लिखा था अल्फा बीटा इज इक्वल टू, या तो ऐसे कर लें या डेल एस ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एस ओवर डेल वाई इज इक्वल, इससे निकाल सकते. इट इज एच एफ माइनस बी जी ओवर ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड एच जी माइनस बी एफ है ना, अल्टरनेट हो जाता है एच जी माइनस बी एफ ए बी माइनस एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहता है. So after solving, it is coming 2, -2. It is the center. I just put the value. Next step is I will shifting the origin. Shifting the origin. Shifting the origin. तो ये नेचर चेक करना, इट इज योर फर्स्ट स्टेप. सेंटर फाइंड करना, इट इज योर सेकंड स्टेप. एंड देन जो भी सेंटर आया उसे ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे सेंटर पे. उसके लिए क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर दिया x+2 से और y को कैपिटल Y -2 से, y माइनस. And it is called translation. So origin will be shifting to this new. Then equation 1 becomes, by this substitution 1 में पुट कर देंगे x y की प्लेस पे. 1 becomes 22 capital X square minus 12 capital XY plus 17 capital Y square plus C dash is equal to 0. Suppose it is equation number 3, equation number 2 सॉरी. और C dash की वैल्यू क्या थी? C dash आपका होगा G अल्फा
plus f beta plus c. This is your c dash. G alpha value we putting it here, it is coming minus 26. C dash is minus 26. Putting it back in 2, so 2 becomes 22 x square minus 12 xy plus 17 y square minus 26 is equal to 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे और 26 से डिवाइड करेंगे, टेक इट राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम 22 over 26 x square minus 12 upon 26 xy plus 17 upon 26 y square. So it is the standard equation ax square plus by square plus 2xy is equal to 1 form. Here a you can see here a is capital A is 22 upon 26, capital B is 17 upon 26 and h is minus 6 upon 26 है ना, इसका half कर दिया. Next is length of the axis. Fourth is length of the axis. तो लेंथ के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अब ना, ये जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक 1/r4 a plus b this. So you have 1/r4 minus 1/r square a plus b and plus ab minus h square, ab minus h square. Minus का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0. तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉलिनॉमियल बन के आएगी आपके पास r4 minus 3r square plus 2 is equal to 0. Two roots is carrying it, 2 1 2, so you can write here r square minus 1, r square minus 2 is equal to 0. So this implies that r1 square is equal to 2 and r2 square is equal to 2 root is करने मान ली तो r1 r2, one root is 2, one root is 1. Where r1 r2 are the length of major semi major axis. So length of major axis 2r1 है ना, 2r1 is the length, it is 2 root 2 and length of minor axis is twice r2 which is 2. So these are the length. 2 ले लिया मैंने तो पूरी major axis हो गई, semi था तो r1. Now you got length, so you can find the eccentricity. Next thing you can find eccentricity. So E is 1 minus r2 square upon r1 square. 1 minus 1/2. It is half. So this implies that E is coming 1/2. Then latus rectum, it was twice r2 square upon r1. So it is coming root. Then equation of the axis. Equation of the axis. Equation of the axis क्या थी, ये जो हमने निकाली थी. This was your equation of axis. Major axis minus a minus 1/r1 square x. इसमें put कर देंगे. So a minus a you have got 22/26 minus 1/2 x plus hy. So minus 6 upon 26 y is equal to 0. And second is a minus 1/r2 square. So 22/26
minus r2 square is 1, x plus minus 6 upon 26 y is equal to 0. बस यहाँ r1 r2 की वैल्यू चेंज, so it will be coming after solving 9x minus 6y is equal to 0, and this will be coming 2x plus 3y is equal to, है ना, सॉल्व कर लेंगे 26 एलसीएम लेके, तो बचेगा आपके पास 22 minus 1, this है ना, you can got it. इसको जब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर x y की वैल्यू वापस पुट करेंगे जो हमने सब्स्टिट्यूट करी थी ओरिजिनल, ये 9x इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9 अभी 3 2 6, तो ये बेसिकली है 3x minus 2y, 3x minus 2y is equal to 0, 2x plus 3y is equal, यहाँ वापस x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x हमने क्या लिया था, x plus 2 and y was y minus 2, so it will become x minus 2, capital X will be x minus 2, 3 of x minus 2 minus twice of y plus 2 is equal to 0, and 2 of x minus 2 plus 3 of y plus 2 is equal to, ठीक है, so this equation will become 3x minus 2y is equal to 10, 2x plus 3y is equal to minus 2. These are the equation of the axis, जो एक्सेस आएंगी आपकी इस पे प्लॉट हो जाएगी, कौन सी एक्सेस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, these are the axes, this is your major axis, this is your minor axis. Last thing is intercepts. Intercepts with this x axis and y axis, x axis पे intercept करेगा ही नहीं, तो for y intercept, put y small में लिखो, वरना putting x is equal to 0 in 1, तो कोने की इक्वेशन थी, we get 17y square plus 92y plus 178 is equal to 0. जब इक्वालिटिक है तो 2 रूट्स आएंगे, it will be giving you y is equal to minus 92, यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज कमिंग नेगेटिव, इमेजिनरी आ रहा है अपॉन 2a, so this is negative, so it will be imaginary axis, यानी कि इसको कट नहीं करेगा, ये imaginary roots आ गए इसको, है ना, so we will not consider imaginary roots. Now for x intercept, putting y is equal to 0 in 1, ये भी आपके पास x जब आप सॉल्व करेंगे तो इट इज बिकमिंग 22x स्क्वायर minus 112x plus 178 is equal to, again it will give you imaginary roots, ठीक है, so ellipse does not intercept the x-axis and y-axis, क्योंकि both are the imaginary roots. So now you can plot the ellipse. फोकी आपके कोऑर्डिनेट्स और निकाल दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी 4 रह गया, फोकी 9 पॉइंट, फोकी क्या बताया था मैंने, एंगल विद द, तो थीटा निकालना है आपको, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज 3x minus 2y is equal to 10, तो यहाँ पर अगर स्लोप निकालेंगे आप, स्लोप इज m is equal to tan थीटा होता है,
तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी से, इट इज कमिंग 3/2। तो साइन थीटा इज हाउ मच? अभी आपका थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यू कैन फाइंड इट हाइपोटेनियस, इट इज कमिंग अंडर रूट 13। तो साइन थीटा विल बी 3/√13 and cos theta will be 2/√13. So foci alpha plus minus ER1 cos theta and beta plus minus ER1 sin theta. So it is coming, and this is 2, alpha 2 आया था, alpha is 2 plus minus 2/√13 and this is minus 2 plus minus 3/√13. These are the things you got. Now you can plot your ellipse. Ellipse कैसा आएगा? If you will be having your suppose x-axis and y-axis, तो देखो सेंटर इसका था आपका 2, -2, तो 2, -2 means here in the third quadrant, fourth quadrant, पहले सेंटर लेंगे उसका, ठीक है, सेंटर लेके you will be taking 2, this is your 2, -2, x is positive, y is negative। इस पे अगर आप प्लॉट करेंगे, ये इसकी एक मेजर एक्सिस आएगी, this and then this is your minor axis, इस तरीके से कुछ यहाँ पर आ जाएगी। अगर ये सेंटर ये दे रहे, दिस इज योर इलिप्स, ठीक है। ये मेजर एक्सिस इक्वेशन आई थी 3x - 2y = 10, दिस इज योर मेजर, इट वाज योर माइनर 2x + 3y = 2। जब प्लॉट कर सकते हो लाइंस को 2,